to another episode of our month-long e-conclave on breast cancer, brought to you by IHW Council and Novartis India. Healthcare is a state subject in our country, and all through this month, we have focused on the efforts made in different states to tackle the rise of breast cancer cases there. Today, we'll turn our spotlight on Madhya Pradesh, or the heart of India, as some would like to say. Now, Madhya Pradesh reported about 11,501 breast cancer cases and 4,278 deaths in 2020. Now, cases have been constantly rising over the last 5 years. Aging, obesity, alcohol consumption, and lifestyle changes are being cited as the reasons for increase in breast cancer cases. Today, we are joined by an expert panel of doctors and public health experts who will analyze the rising trend of breast cancer and the region-wise action taken by the government and private healthcare providers to increase awareness and treat the disease. Please welcome Dr. Shailesh Shakale, Deputy Director, NRHM, Department of Public Health and Family Welfare, Government of Madhya Pradesh, who will be shortly joining us. We are also happy to welcome Dr. Shyam Agarwal, Director, Navodaya Cancer Hospital, Bhopal, and Dr. D.P. Sahu, MD, DM, Medical Oncology, Silverline Hospital, Bhopal. A warm welcome to Dr. Sahu and Dr. Agarwal. Thank you so much for joining us. You've been practicing, both of you have been practicing for a long time. So I want to try and understand what trends have you seen over the last few years? Yes, we have statistics, but let me start with you, Dr. Agarwal. What is the trend of breast cancer cases that you have seen? And when it comes to cancers that mainly affect women, breast cancer versus cervix cancer, what is the trend that you've seen over the last few years? Yeah, because I've been practicing since last 25 years in Bhopal, and post MIC exposure, the ICMR has settled a population-based cancer registry in Bhopal. So just to have a idea about whether the gas has done something to the Bhopal population. But as we are talking of the whole of the Madhya Pradesh, the practice, what we do and what we see the patients now, there is a shift to the younger age group. Like what we used to see, the patients of breast cancer in say last 2 decades back, it was around 50 and beyond. But as you said, there's a change in lifestyle. So we are seeing more younger patients, and that too with a larger lump size. And awareness-wise, we do activities like this is the October month, as we know, all breast cancer awareness month. So we have programmed a awareness rally also, and done some camps and address to the high risk group. So that is what we are doing. But I think it is a kind of very little effort as far as the real breast cancer awareness means, because it should not go only for the October month. It should continue the whole around the year. And there should be, more and more awareness through the media, through the, newspapers, electronic media, or even the beauty parlors. They should always show the preliminary symptoms of the breast cancer, how it done. And even breast cell examination is very, very important. Mammography is being done, but still randomly. The guidelines, they say it should be beyond 40 years, but they do it, very randomly. So those guidelines, I don't think they are being followed regularly. So still a lot of, efforts to be done in this particular field. All right. Dr. Sahu, what Dr. Agarwal is saying is sounding as, a caution for everyone, because he's seeing younger patients. Now, cancer is the disease of the aging. What's happening? Is this only in Madhya Pradesh, or is this something we're seeing around our country? And what have you seen in your practice? Yeah, first, if you look at the Indian data, we as the Indian population, our females, we get breast cancer 1 decade early. We get it 10 years earlier than the West. So it is a well-known fact that Indian breast cancers are younger.
we have much more aggressive disease, and we usually are 10 to 15 years younger than the West. Point number two, as what Dr. Shyam Agrawal spoke, I agree. Part of it, I do. My practice has been slightly different to what he has told. In my practice, have seen a little patients coming to me with a lesser lump size, and they are on a little bit earlier stage than what it was when I started practice, maybe 15 years or more. So in my my practice has been more than 15 years now. So I have been seeing a much more younger patient. That's what I agree to him. But the patient come with a particularly earlier stage. That's also there. You would see those stage 3, stage 4, because in India, we as a population are little bit ignorant, and we try to shift our medical problems to a later point of the time, because we want to listen and we want to accept that मेरे को cancer नहीं हो सकता. That's what is the mindset that normally comes to the mind. Regarding the gas thing, which Dr. Shyam picked up, the MIC, I'm not sure. The ICMR data was little bit that the population did not suffer anything far different from the larger population as such. So also how do we catch them early is the trick, and how do we prevent them is the second trick. So coming to the how do we catch them early, what do? We normally could only do some radio awareness programs. We can go to the media once a while. But he rightly told that the media only remembers breast cancer in the month of October. And that has been the bane of it. It is the number one cancer in females. And cervix in rural and breast in urban. But we somehow only speak of breast cancer in the month of October. And I think that's not enough. We do not have enough campaign going across in the private or in the government circles also. You do not see hoardings creating awareness on breast cancer. I would see hoardings of big people, dignitaries coming to my city. I don't see a single hoardings of a breast cancer awareness, or let's say breast cancer awareness. Simple WHO steps to prevent cancer. These are very simple 4-5 things which WHO told a few years back. I don't see that as a hoarding. It's a simple thing that can happen. And if it comes from a government sponsored thing, you get more validity and you get more acceptance among the public. And if you look at WHO, and I think we'll discuss at some point how do we prevent cancer. I'd like to talk about the prevention of cancer, because in such a month of October, it's more about prevention and catching them early. Cancers are there to stay. They will stay. But it's up to us, how do we catch them early so that people are treated more early and are cured more. So I would like to put it on record that IHW Council talks about breast cancer around the year. We do many awareness shows. We talk about different types of cancers all through the year. And yes, it's important to keep the dialogue on. But what Dr. Agarwal said, perhaps have some information in beauty parlors. Because, while to have an all-out awareness or big hoardings, people are still fearful of cancer. It's becoming more and more common. In nearly every family you hear a case. But, throughout our country, there's still a fear. And, a large hoarding may not, help remove the fear. It may get it more ingrained. You want to say something, Mr. South? Dr. South? Yeah. But let's come down to HIV. And I'll take the example HIV. It was as dreaded, if not more than cancer, 20 years back. And we had those Sabana Azmi ads, I still remember. See, HIV mareez ko chhune se pyar badhta hai HIV. That's the landmark data which happened. And because it was something that was hitting it, it was a pandemic sort of thing. Africa was suffering and India was probably a populated country, it could have suffered. So I don't think if there's a fear, how do we break the fear? How do we break the ice? The ice can be only broken by soft campaigns. And let's say, what does WHO say about the steps to to decrease cancer? And you do not have tobacco. You exercise 30 minutes a day for continuously 5 days a week. You decrease obesity. You have a healthy diet, and you take your vaccines. Is anything of them frightening? If I have these 5 things on the hoarding and I tell them, as per WHO, your chances of getting cancer can decrease by 30%. What more message can you give? And nothing is a doctor's thing. Everything is a cheap thing which you can do at home.
So my point is you have to reach out to the public. Cancer is growing, population is increasing, and we have to counter it head on. So I think there is a soft approach and we can take it. And I took the example of HIV, and there cannot be more apt comparison than HIV. All right. So perhaps we need influencers, we need greater public advocacy about breast cancer around the year, so that it's in your face and you're not shy to talk about it and are more aware about it for your own good. Dr. Agarwal, you said that you are seeing a trend where younger patients are coming with breast cancer. I would think younger people are people. So what's the paradox here? How come younger patients in our country get cancer, especially breast cancer? Yeah, basically, you can choose your father-in-law, you cannot choose your father. So there are the more genetic factors there. This is number one. Number two, as we know now, the younger girls, they delayed marriages and delayed pregnancies, and they are more career oriented. Of course, they indulge into the fast food, and even I see in my Bhopal MP, a lot of younger girls are smoking, using alcohol, kind of. So there's change in lifestyle also, and there is some familial uh, uh, kind of progression. What I was just putting into the screening, like as we have a lot of ASHA workers. Apart from hoarding, I really appreciate the example of HIV, and that I think it impacts. It is you just cannot wash it out because it's useless. It impacts to the younger girls or even the ladies. So what we need to, as a government level, uh, there are non-communicable disease ASHA workers also. Like we have to implant or the uh, appoint such kind of ladies who not only see the blood pressure, diabetes, and they also examine the breast. We can show them that how to examine the breast, and how they can see the lump or the early warning signs of breast cancer, and simultaneously they can see the cervical examination also. So that Tata Memorial has done a study in cervical cancer, and yeah, so they have detected a lot of cancers early, and cervical cancer especially. So I think we have to, in the root level, we have to train these ASHA workers. Being female, they can communicate better, they can examine the ladies, and we can, just train them how they would like to see. And now everybody has got the mobile, YouTube. If you see the breast cell examination in the YouTube, everybody can be trained easily. All right. We're now joined by Dr. S.P. Sakale as well. Dr. Sakale, we've been speaking with Dr. Sahu and Dr. Agarwal, and what they're saying during their practice, they are seeing now younger patients coming in, and this could be because of the lifestyle or whatever be the reasons. I would request you to please turn your video on. Yes, good to see you, Dr. Sakale. Now, I'm trying to understand, Dr. Sahu has spoken about the WHO guidelines for early detection of breast cancer and what you can do to try to prevent cancer together. But will these standards work for India? Because most of these standards are made by made in the US and the UK, the Western countries, where we see cancer as the disease of the aging. Our doctors here have told us that they have documented that in our country, cancer comes a decade earlier. So do we need our own standards? Do we need our own practices? Do we need our own methods to ensure that we catch it early? Because what's the point of having a mammogram on a 40-year-old? It's not going to be that good. So, but that is the gold standard, or that is the early detection in the West. So how do we find our own gold standard practices? Madam, can I speak in Hindi? Please. First of all, I'm sorry to joining late. So,
Ma'am, as I am looking after ASHA program, or it is community process program in Madhya Pradesh, we are having around 75,000 ASHA workers here. जो नॉर्मली जो ब्रेस्ट कैंसर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में इंक्लूड कर रहे हैं, गैर संचारी रोगों में। और इसके लिए एक आशाओं को हम लोग एक पूरा 5 days का ट्रेनिंग देते हैं एनसीडी मॉड्यूल पे। बेसिकली उनको हर जो 30 के ऊपर की जो भी लोग हैं पॉपुलेशन में, 30% जो हमारे 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी का एक समुदाय आधारित मूल्यांकन प्रपत्र, एक सीबैक फॉर्म, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट आशा भरती है। और उसमें इट इज रिगार्डिंग अबाउट द असेसमेंट ऑफ द मतलब जोखिम का मूल्यांकन कि कितना है। तो महिलाओं के पास, हर महिला के पास तो आशाएं जाती हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछती हैं अपार्ट, मतलब हर 30 से ऊपर रहता है। बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो रिलेटेड रहते हैं कि ओरल कैंसर तो नहीं है, सर्वाइकल कैंसर तो नहीं, इसमें स्तन में गांठ होना या फिर निपल्स में कोई खून का रिसाव होना, इस तरह के आकार के माप में अंतर, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक अवेयरनेस तो धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। जिस तरह से बाकी अभी हम सर्वाइकल कैंसर को लेके हम चाय के साथ एक काम कर रहे हैं क्लिंटन हेल्थ के साथ, तो उसी तरह का कोई एक प्रोग्राम यदि हम लोग आपके माध्यम से या किसी और अन्य माध्यम से करें, ताकि हम जो हमारे कम्युनिटी में जितनी भी महिलाएं हैं, मैदानी कार्यकर्ता, आशा या आंगनबाड़ी वर्कर, उनको अवेयर करें। उनकी संख्या सब मिला के पूरे मध्य प्रदेश में 3 लाख होती है। वो जिन महिलाओं से जुड़ेंगी, जो आप मेमोग्राफ या जो बात कर रही है, शहर की महिलाओं को तो पता है, न तो गांव की महिलाओं को पता है, और न उनको ये पता है कि अब अगर कोई ऐसी स्थिति आ रही है तो उनको कहाँ अप्रोच करना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो डॉक्टर काले, जो आप कह रहे हो कि आपकी 5 day ट्रेनिंग होती है आशा वर्कर्स के लिए, तो इसमें क्या आप उनको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी बताते हैं? क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो तो ओरल क्वेश्चनर है। अब किसी को शायद पता भी नहीं है कि कोई लंप है, उन्होंने कभी सेल्फ एग्जाम भी नहीं किया, तो आप मुझे सवाल पूछोगे तो बोलेंगे मेरे पास कुछ नहीं है। तो क्या वो करते हैं, एग्जाम भी करते हैं, फिर सवाल पूछते हैं? नहीं, केवल सवाल पूछती है, केवल सवाल पूछती है। यदि ऐसी कोई चीज है, देखिए आशा, मोस्ट ऑफ द आशा वर्कर्स जो हैं यहाँ पर हमारे यहाँ, वो मतलब अराउंड 45% आशा वर्कर्स आर 8th पास ओनली। तो बहुत ज्यादा उनसे हम एक्सपेक्टेशन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मॉड्यूल है, उसपे हम उनको 5 डिजीज जो है, मतलब हाइपरटेंशन, डायबिटीज और 3 तरह के कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, इनके बहुत प्रिलिमिनरी जो लक्षण होते हैं, एकदम प्राथमिक लक्षण जो होते हैं, उनके बारे में आशा को बताया जाता है। और हम उसको सिर्फ वो चीजें और सीबैक फॉर्म मतलब मैंने बताया ना आपको, जो सीबैक फॉर्म एक फॉर्म होता है, वो मैं और पार्टिसिपेंट्स के उसके लिए मैं उसकी कॉपी अवेलेबल करा दूंगा आपको। केवल हम उसको वो बताते हैं। यदि ऐसा कोई प्राथमिक लक्षण है तो उसको फिर मतलब इमीडिएट उसको जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उस पर रेफर करना है। इसके बाद जो भी काम है, या तो वो हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो करेंगे, अदरवाइज मेडिकल डॉक्टर्स करें। आशा को केवल जी। तो जो काम आशा वर्कर्स का है वो जागरूकता बनाने का है और इन्फॉर्म करने का है। इन्फॉर्म करने का, क्योंकि तो एक और चीज मेरे को आपसे पूछनी है कि क्या वो रेगुलरली फॉलो अप भी करते हैं? कि कभी कभी होता है ऐसे कि क्वेश्चनर आप भरवा लेते हो, फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जाके बोलते हो कि लगता है कि आपके कुछ अर्ली साइंस या लक्षण है, आपको ना डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर जाना चाहिए। तो फॉलो अप भी होता है क्या वो कर रहे हैं आशा वर्कर्स? मैम करती है मैम। यदि मान लो वो सीबैक फॉर्म में जो क्वेश्चनियर है उसमें यदि किसी भी तरह का कोई सिम्टम है और रेफरेंस के बाद यदि उसका पर्सन का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। देखिए, सिंस आशा वर्कर्स आर टोटली ऑन इंसेंटिव बेस्ड, हर चीज का उनको इंसेंटिव रहता है। तो जो हमने आपको जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बताए, हमने हर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए आशा वर्कर्स को 100 रुपीज पर ईयर पर पर्सन एक फॉलो अप रहता है। तो यदि वो कोई ट्रीटमेंट कर रहा है या कोई मेडिसिन ले रहा है या फिर उसको उसी महिला को हॉस्पिटल जाने के लिए किसी के साथ की जरूरत है, तो आशा वर्कर्स उसमें हेल्प करते हैं।
All right. जी जी. Right. Dr. Agarwal, you heard Dr. Sakali talk about how entire process is underway for early detection and greater awareness about breast cancer in rural areas. Now, I want to understand: do you think this is sufficient? Because at the end, after awareness, if there is a problem, they have to go to a district health center. And what happens is most of the times here you'll find a male doctor. Plus, women have this tendency ki maybe it's, let me do something first. This is more important. I am last. So, is this enough? Do we need ASHA workers to give a push also? The community to give a push. Don't put this off. Tackle this quickly, and don't worry about approaching healthcare centers to get it clarified. Or do you think this kind of model is good enough? I think 3 lakhs ASHA workers is a big chunk. We have a big force which really can change the scenario of breast cancer. And जैसे सागली साहब ने कहा कि ये 8th पास तक होती हैं, but every आशा वर्कर इज ए फीमेल. सो सबसे पहले हम उनको खुद के सेल्फ एग्जामिनेशन बताएं, उसी में उनको we should tell them how to examine, and if somebody complains कि मेरे को lump है, so we should not leave. Just filling a form I don't think is fulfilling this subject or the objective. They should be trained how to examine, and it's very easy, and they should examine themselves also. So not only they are creating awareness to the others, they should also be aware about their own health and own breast lumps. So सागली जी से हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जा सकते हैं. It is not only the filling the form. अगर कोई लेडी बोलती है कि मेरे को lump है, तो she can examine, and we can very well train them how to examine the breast. सर उसमें हम कराते हैं उनको एक बहुत प्रिलिमिनरी, लेकिन मैं ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिकली आशा वर्कर्स को किसी तरह का कोई मतलब ट्रीटमेंट सजेस्ट करना या वो नहीं, सिर्फ वो प्रारंभिक लक्षण के आधार पर आगे रेफर कर सकती है सर. उसको केवल रेफर कब हुआ है. तो, और दूसरा एक जैसे सर सॉरी एक मिनट में बात बोल रहा हूं. जैसे सर हमने अभी एक पेंटल हेल्थ की मदद से सर्वाइकल कैंसर पे एक छोटी सी किताब निकाली सर. बहुत सिंपल सी है और वो बेसिकली आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए ही है. तो वैसे यदि सर हम ब्रेस्ट कैंसर पे भी एक छोटी सी बुक यदि बिल्कुल हिंदी में, और उसकी हम ट्रेनिंग को हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे सर. जी बिल्कुल निकालना चाहिए. और सागलिज मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम कब से चल रहा है और क्या इसके कुछ हमारे पास फीडबैक्स या डाटा आए हैं इसके? सर ये प्रोग्राम अभी मतलब जस्ट इसको हम फाइनल शेप दिया है. बुक प्रिपेयर हो गया है. अब इसके जो मतलब फील्ड लेवल पर जो हम अवेयरनेस लाना चाहते हैं ग्रास रूट लेवल तक अभी नहीं आई है, और काफी लंबा जाना है क्योंकि सर इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर ब्लॉक लेवल और फिर आशा लेवल, वो ट्रेनिंग में थोड़ा समय लगेगा सर. Right. I think Dr. Sahu also wants to bring in a point. Dr. Sahu, please go ahead. So I totally take Dr. Sakalia's point that you cannot, and I would not empower ASHA to do examination because once you let go do examination, then you're pretty sure that they are probably going to give some form of advice to go forward to meet a doctor or not. And I totally take it that you would be wrong in most of the time. So the point which I make is I understand their limitations, and they have to catch a possible high risk population or patient who are symptomatic, otherwise would be at home and cannot come out. And the job of ASHA is to bring them to the health system. That, if I'm not wrong, that's what the system wants actually. So they reach the homes rather than the people coming to the hospital, and those who need a hospital will be referred to hospital. The point which really is lacking in cancer, and let's say in this case breast cancer, is my medical staff at PHC and even at a district hospital level qualified enough to recognize and diagnose a breast cancer and treat it. That is the main chunk which I'll come down to. Do I have qualified radiologists at district places or at the sub-district places to diagnose and read a mammogram report? It is very easy to tell मैं mammography करा दूंगा.
But I know even in a city like Bhopal, there would be some handful of radiologists among those hundreds who can give me a good mammography report. So it's important to go beyond that. Asha will do the job, will bring you those chunk of patients. If they bring me 100 patients, how do I go forward with that? If I don't do that, then the population will lose hope. And if they come down to a hospital of cancer and they will tell, डॉक्टर साहब मैं तो अपने डॉक्टर को दिखा रही थी 1 साल से और बड़ा हो गया, then probably the system will collapse further. So what I need to just suggest, maybe I am too non in the private sector, so I don't know how the government takes my advice, but a very honest advice, Asha job, they're doing it very well. Can we go beyond that and train the hospitals and the healthcare at the village, taluka and the sub-district and district level? And do we have the facilities to diagnose, do a biopsy, do we have the pathologists to read a slide at that level who can really read these things? Lastly, one big suggestion. Anything that is visual is more attractive than anything that can be read. The population is still not that literate enough. Why not make a good 2 to 5 minutes video, those are like you do for ORS and other things, and we can do those to create awareness. And those videos can be put up by Ashas and can be coordinated. And the visual impact is much bigger than the textbook approach, because I take many things and I throw it away. No, I understand, Dr. Sahu, but that that video can be made by anyone, and the Ashas can share it. That necessarily has to be the government doing it. But yes, that is the training of the healthcare workers has to be done by the government, especially at the district taluka levels. Dr. Scalia, आप हमें बताना चाहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? क्या आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैमोग्राफी हो जाती है, और क्या मॉडल है आपका? हब एंड स्पोक मॉडल है, कैसे काम करता है? और ये हम मैमोग्राफी की बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक वेस्टर्न गोल्ड स्टैंडर्ड है, पर जब यंगर वुमेन आती हैं जहां मैमोग्राम शायद बहुत इफेक्टिव ना हो, तब क्या कर सकते हैं? तब कैसे उनको एक्यूरेटली डायग्नोज कर सकते हैं? ये सब ट्रेनिंग क्या दी जाए? One more line and then he can answer. There is a difference between a patient who comes with a breast lump. That is, I am doing a diagnostic test. Okay. And that is where mammography is indicated if there's a lump in the breast. I can do and every mammography will have a complementary sonography. Means a sonography, ultrasound of the breast with the right machine will be done free of cost. You cannot complete a mammography without a sonography of the breast. Point number one. What we are talking of is screening mammography. Screening mammography is what you're speaking of, that anyone who is not symptomatic or does not have a lump will routinely do a mammography once in 18 months beyond the age of 40, 45, whatever it is. So these are two different subsets, and I think we have to make a differentiation between these two. All right. Dr. Sakale, diagnosis के लिए क्या mammograms है काफी डिस्ट्रिक्ट पे, तालुका पे, और क्या आपकी हेल्थ केयर स्टाफ भी एडिक्वेटली ट्रेंड है कि वो अच्छी से एक मैमोग्राम और सोनोग्राफी कर पाए ताकि डायग्नोसिस ठीक हो, फिर ट्रीटमेंट भी आगे बढ़े? मैम सॉरी, इसके लिए डॉक्टर आशीष सक्सेना या डॉक्टर नमिता नीलकंठ जो कि एनसीडी को स्पेसिफिकली देखते हैं, उनका होना जरूरी था, क्योंकि हब एंड स्पोक मॉडल हमारे यहाँ है। डॉक्टर सक्सेना उसके नोडल ऑफिसर है। लेकिन मैं फिर भी ये बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में इन, जैसे डॉक्टर साहू ने बोला, हाँ ये बिल्कुल डेफिनेट है, फैसिलिटीज की बहुत कमी है, बहुत है। इन मध्य प्रदेश देयर आर 351 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, सभी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पे गायनेकोलॉजिस्ट पोस्टेड है, मैमोग्राफी वहां पॉसिबल है। स्पेशल और देन जो कुछ बड़े शहरों में सिविल हॉस्पिटल्स हैं, दिस इज अराउंड 14 and 15 वहां पे है, और हमारे जो सीएचसी लेवल पर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो कि हमारे नॉर्मली तालुका लेवल पर होते हैं, 313 पर मैमोग्राफी के गायनेकोलॉजिस्ट पोस्टेड रहती है मैमोग्राफी। लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर कि सभी जगह ये अवेलेबल है। इस पे मतलब इस पे अभी बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है। एंड राइटली सेज, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि एकदम से यदि लम्प दिख रहा है तो महिला कहाँ जाए। फर्स्ट अप्रोच हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि सीएचसी लेवल तक कम से कम एक गायनेकोलॉजिस्ट या वहां पे एक रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए। आइडियल सबकी पोस्टिंग है, लेकिन अब वो है, मैं उसके बारे में पूरा बता नहीं सकता, क्योंकि पूरा वो जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है वगैरह मेरे जानकारी में नहीं है। Right, Dr. Sahu, please go ahead.
सर मैं एज ए डॉक्टर, जब मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं, मैं हमेशा एक वर्ड बहुत क्लियर करता है, अंडरस्टैंड दी सेक्सुअल बैरियर, दैट आई अंडरस्टैंड, बट आई अंडरस्टैंड अ डॉक्टर शुड बी अ डॉक्टर, एंड आई फील दैट ब्रेस्ट शुड कम अंडर अ सर्जन रादर देन अंडर अ गायनेकोलॉजिस्ट। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। और गायनेकोलॉजी की ट्रेनिंग जो होती है इज अराउंड द फीमेल जेनिटल एरिया, एंड दैट देयर इज नो ट्रेनिंग दैट इज डन ऑन अ ब्रेस्ट एज सच। द सर्जन्स जो हर सीएचसी में अवेलेबल होंगे are the better person to handle a breast disease, is my thinking, and I would love this to change. The thought process that हम gynecologist पर जाएं breast के लिए, I think should change, and surgeons के पास पहले जाना चाहिए at the CSC level. Cancer detect हो जाए तो अलग बात हो जाती है पूरी। वो सर्जन तो अवेलेबल है सर, सर्जन उस लेवल पे अवेलेबल है। तो इसीलिए मेरे को लगता है देनी चाहिए सर कि वो भी ब्रेस्ट कैंसर को टैकल करे और ये ना छोड़े कि ये तो लेडीज का प्रॉब्लम है, गायनेकोलॉजिस्ट ही देखेगी। तो आई थिंक डॉक्टर साहू ये कह रहे हैं कि जो जनरल प्रैक्टिशनर्स है, जो सर्जन्स हैं, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अगर लोग आ रहे हैं आपके पास तो आप उनको डायग्नोज कर पाए। मैम हमने जो अभी मतलब मैं अभी आज मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था, अदरवाइज मैं आपको वो मॉडल बताता जो हमने सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाया है। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है। उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे क्लिंटन हेल्थ के कोऑर्डिनेटर्स है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे, और उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो सर्जन गायनेकोलॉजिस्ट है वो एज ए रिसोर्स पर्सन उसमें रहेंगे। मतलब ये हम कर सकते हैं कि यदि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो सर्जन है गायनेकोलॉजिस्ट है वो उसमें आप रहेंगे, और ब्लॉक लेवल पे जो भी डॉक्टर अवेलेबल है, सर्जन, मेडिकल ऑफिसर, ऑल टाइप्स ऑफ मेडिकल ऑफिसर, सबको ट्रेनिंग दी जाए। एंड मेडिकल ऑफिसर्स बेसिकली इन मध्य प्रदेश 89 ब्लॉक्स हमारे ट्राइबल हैं, तो वहां पे हमेशा मैन पावर की कमी है। लगभग मेरे हिसाब से 40% सीट्स आज भी खाली हैं। तो जो भी अवेलेबल है, जो भी मेडिकल कर रखा है, मेडिकल जो भी सिंपल एमबीबीएस है, जो वहाँ पोस्टेड है मेडिकल ऑफिसर, हमको उसकी ट्रेनिंग उसको देनी चाहिए, यदि रेफरल होके आता है। इवन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैडर आ गया डॉक्टर साहब, जिसको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बोलते हैं। ये लगभग 15,000 का कैडर है। इसमें अभी 10,000 पोस्टिंग हो चुकी है। ये बीएससी नर्सिंग बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, इनको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बोलते हैं, और वो बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को डील करने के लिए ही है। सारे सब हेल्थ सेंटर थे जहाँ पे कि जैसे विलेज 4 या 5 विलेज के ऊपर एक सब हेल्थ सेंटर था, उसको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक सीएचओ पोस्टेड है। तो सीएचओ भी एक बीच की हो सकती, जो वो उतना टेक्निकल तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मतलब उसको ट्रेन करने से हम काफी समस्या के मतलब पास जा सकते हैं। Dr. Agarwal, while a plan is underway and enough effort is going in from the government side to ensure that, infrastructure, awareness, everything is improved so that cancer can be detected early. Now, till we reach the ideal state, it may take some time. In the interim, the private healthcare sector will obviously take a large part of the role. So, in your practice, do you see this increasing? What is it that you would like to see more aware patients, earlier stage? How do we do that? Because, we can't leave everything to the government. The government is doing a lot of, the heavy spade work to make this a success in Madhya Pradesh. As a private practitioner who is treating breast cancer patients day in and day out, what can the private healthcare sector do to perhaps shoulder this entire responsibility of ensuring better healthcare for breast cancer patients? Yeah, I will answer this question little later. The first, I would like to just comment upon what Dr. T.P. Sahu told. Beyond Asha worker, I am totally agreed that the further pedigree of the treatment plan should be further reinforced, and they should be trained. But still, I am sticking to Asha workers that when they are being trained to examine their own breast, why they cannot examine the other lady's breast? Number one. Number two, we have a model of Tata Memorial Hospital where they are trained to see and look into the cervix, and they've shown so many pictures that how it looks, how the malignancy looks. So I think we have to empower those Asha workers to at least examine if somebody is complaining.
and examine your own breast. 3 lakh ASHA 3 lakh, workers yes. is a That will be big a lot chunk of awareness. That's what. So this is one. And regarding private centers, like we have awareness posters, and whosoever comes in with their families or that, so we try to have a kind of promotion for their screening, that they should also have under the guidelines of WHO. They can submit themselves for the screening, and if they have, so we see few of the cases randomly reporting to us that हमने देखा और हमको we found that हमको भी breast lump है, so that what we can do, and of course as we are the specialized center, we can diagnose up to the last level of breast cancer. Dr. Sahu, you were saying that you are seeing patients in earlier stage. Are these maybe urban, well-read, educated patients, or is this across the board? On the contrary, I'm seeing a lot of these patients females coming from the rural background. And in early stage. Yes. And I have seen even doctors coming in a later stage. So it's all in the mindset. I've seen female doctors, quite a few coming in stage 3, stage 4. And they are doctors, qualified doctors. The fear of that is it cancer? I will not do a test. So that is something that the ice needs to be broken, which you spoke in the first. I think what you spoke and what you asked Dr. Shyam Agrawal is a very important thing. How can the private help in this breast cancer thing, or let's say cancer as such? And see, we have a very limited clientele. My approach cannot go beyond few hundreds, maybe some thousands, maybe. The point is the government probably does not have enough technical support and help at this point, although has the manpower and the reach. So the best thing would be to collaborate with the cancer specialty hospitals and doctors who are willing to contribute time. And the COVID has taught us that you can do a online training program. Previously, I have done some few training programs at PHC, CHC level. We used to go and do it. Now we don't need to go and do it. If this is arranged, I for one can volunteer to do such trainings. If it is done in a right way and done with the purpose of increasing awareness and we are heard. The point is many times we are not heard. We are just, we speak and then it is we are shocked off. If it is done in the right way, without any interest of mine, more than me, all of us, even Dr. Shyam would be more than happy to contribute to such efforts. The point is, they have the approach, they have the system, they have the manpower. We probably have the mind behind the cancer treatment. So we can and contribute, and with online things, the training can go on very well. The point, what I am very fearful is, how does a patient who from the PHC level reach a cancer unit? That journey also has to be addressed by the government in a systematic manner. And if that is done, it will be a lovely thing. So we have to collaborate with the government. The private can only do radio programs, can talk on the television, can put on hoardings, but I would not be able to reach more than 100 at a time. So we have to reach the government at some point of time. Right. The collaboration is definitely a good idea. Dr. Sakale, are you considering a training program which can somehow be driven by some of the private practitioners, given that, technology can enable a number of things? We now have startups where, this questionnaire that you're giving to an ASHA worker is actually an app to download on your phone. Most people have phones. And, that way keeping a track is easier. You answer the questionnaire on phone. If there are any red flags raised, then a follow-up happens. Plus, there are some states who also have the mammo bus, etc., where you're taking all this, the screening to perhaps a district or somewhere. There again, you will need ASHA workers, Just because the bus is coming, people aren't going to line up. And even if they line up and they get themselves screened, if there's a problem, who's going to follow up? So you need your ASHA workers. But आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि private hospitals के साथ कोई training program run किया जाए, technology को कैसे leverage किया जाए, ताकि awareness सब तक पहुंचे और early diagnosis हो पाए? मैम, आशा वर्कर्स का ट्रेनिंग का पूरा एक सेटअप एकदम डिफरेंट, अलग टाइप से सेटअप पैटर्न है. उनको बहुत जो हमारे ट्रेनर्स रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ट्रेनर्स रहते हैं, सारे टेक्निकल नहीं है उसमें, सिंपली वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के रहते हैं. और वो आशा का जो मॉड्यूल है जो हमको NHSRC देता है, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर,
सारे मॉड्यूल हमारे आशा के वो डिजाइन करके देता है। सो ऑन एवरीथिंग, मतलब मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, सारे STI RTI एंड प्लस NCD पर भी जो मॉड्यूल दिया, NCD के मॉड्यूल वहीं पर मतलब उनकी अपेक्षा यही है कि सिंस नेशनल हेल्थ मिशन इज रनिंग इन 18 डिफरेंट स्टेट्स, तो हमको पूरा वो हिंदी में मिलता है, फिर हम उसमें जो कुछ और अपनी लोकल भाषाओं में चीजों को ऐड करके आशाओं को उतना तक बताते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यदि हम इस पे कोई सघन प्रोग्राम, मतलब एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम अगर इस पे हम करते हैं, इंटेंसिव प्रोग्राम इस पे करते हैं, तो डेफिनेटली हम जो हमारे मेडिकल फैटर्निटीज है, मतलब प्राइवेट के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मैं गवर्नमेंट के, उनको जोड़ के एक पूरा ये प्रोग्राम एक चेन टाइप की बने कि यदि आशा किसी को रेफर करके लाती है तो फिर उसको फैसिलिटी लेवल पर किस तरह से उसको डील किया जाएगा कि डॉक्टर्स को पता रहता है, एंड फर्दर रेफरेंस जो है। सो हमको पूरे स्टेट, मतलब सब हेल्थ सेंटर से लेके तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और जो स्पेशल मेडिकल कॉलेजेस है उस लेवल तक सभी लोगों को अवेयर करना। हाँ, ये अभी जो NCD मॉड्यूल है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, वो वैसे ऑनलाइन भी अवेलेबल है, SRC की साइट्स पे है उसमें। लेकिन उसमें केवल आशा का जो मैंने सिम्टम बताए और जो प्राइमरी एग्जामिनेशन है, डॉक्टर अग्रवाल ने बहुत सही बोला कि वो कम से कम अपने खुद के वो तो कर सकती है। डॉक्टर सकाली, जो डॉक्टर साहू कह रहे थे ना सर, उनका कहना है कि आप प्राइवेट डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करिए, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल पे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग करने के लिए। आप आशा वर्कर्स के इंचार्ज है, पर आप ये एक सजेशन तो दे ही सकते हैं अपने कॉलीग्स को कि प्राइवेट इंडस्ट्री इज विलिंग, दे आर विलिंग टू पार्टनर विद यू फॉर एटलीस्ट ट्रेनिंग ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज। सर, और सेकंड चीज है, रेफरल सिस्टम आप पूरी गवर्नमेंट पे करिए सर। सर पॉइंट है कि वी नेवर टेल यू दैट हम ट्रेनिंग करा रहे तो उस डिस्ट्रिक्ट से 2 पेशेंट हमारे पास आए, कभी नहीं सर। जो सिस्टम आपका है, जिस सिस्टम पे आप रेफर करना चाहते हैं, बिल्कुल उस पर कंटिन्यू करिए। व्हाट आई मेंट वाज टू ट्रेन द मेडिकल पार्टनर्स, नॉट द आशा। The ASHA program is a very differently run program, I understand, and we do not want to interfere in that. And उनको तो बहुत सारे काम करना है कैंसर छोड़ के, मैटरनल, चाइल्ड हेल्थ, बहुत सारे काम है सर। तो we cannot and we do not want to get involved in that. So मेरा suggestion, I think so, she has rightly picked up, and referral की बात ही नहीं कर रहे हैं सर। Let the referral happen as per the government system. Let it be only referred to a medical college. कोई इशू नहीं है, that is a very different thing altogether. But the awareness is what we are speaking about. That's why I just spoke about it. नहीं, अगर सर बिल्कुल सही, मैंने वही कहा कि हम उसको एक जब भी अभी हमारा जो मतलब am I audible? Yes, please go ahead. हाँ मैम, अभी हमारा जो है वो केवल एक जो NHSRC ने हमको जितना मॉड्यूल डिजाइन करके दिया है केवल उसी लेवल पर है, और वो उसमें ब्रेस्ट कैंसर केवल एक पार्ट है, मतलब बाकी कुल मिला के जो NCDs भी हैं, अदर NCDs भी हैं, इस पे हम इंटेंसिवली काम कर सकते हैं और किया जा सकता है। जो यदि आपकी संस्था या कोई भी इसमें ऑर्गेनाइजेशन इसमें हेल्प करे तो, और इसको मतलब एक लेवल पे ये जरूर है कि आशा चूंकि बाकी काम करती है, लेकिन यदि वो सीबैक फॉर्म भरने जाती है तो मैम वो सीबैक फॉर्म में कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और एक जैसे किसी घर में जाती है तो वो फिर सारी चीजें देखती है। यदि छोटा बच्चा है तो उसको भी उसके वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं, या मदर है यदि प्रेग्नेंट वुमन है तो फिर उसकी NC हुई कि नहीं, या उसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इंश्योर कराना, ये डेफिनेटली उसके काम है। और आशा अब एक तरह से वो उससे आशा अपनी बात इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है, उनकी टोटल मिला के 71 एक्टिविटीज हुई है। सो और हर एक में उसको इंसेंटिव भी है, तो हमारा पूरा सिस्टम या जो एक आशा के रूप में कोई लेडी ज्वाइन करती है उसको पता है कि उसको ये सारे काम करने हैं। काफी बिजी लाइफ है आशा वर्कर्स की, और काफी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। डॉक्टर रमन, पिरामिड का जो नीचे का लेवल है ना मैम, वो बहुत बड़ा है। अब 75,000 मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर। Dr. Agarwal, you wanted to say something? Yeah, just extension of your point. I'm the senior most oncologist in Bhopal. Rather, I was the first one in MP and Chhattisgarh when it was not divided. I yet to see a government program where they partner with private, not a single program. So
there is, there is a bias or some kind of hitch that whatever Dr. Sakale is also telling, if he will propose that will partner the private persons or private doctors, government cut a knife there. So there is a kind of inherent bias in the government sector that partner with the private firms is always never happened. So I think that bridge need to be अब तो हम काफी जगह देख रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल, even this national insurance scheme, the government pays for it, but they do go to private hospitals. So many of these programs are coming up. So Dr. Sakale, हमारी आशा है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के साथ काम करना शुरू कर देंगे सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल सब कुछ पॉसिबल कर रही है, तो कोई परहेज नहीं होना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली हो रहा है, तो इट कैन हैपन इजीली। सर का बहुत रिस्पेक्टेबल नाम है सर आपका, और मार्कोलॉजी में सैल्यूट योर सर्विसेज फॉर दैट। लेकिन सर हम अभी तक जो हो चुका है उसको छोड़ के आगे से आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, आई एम नॉट, आई होप आप सजेशन लेंगे। डॉक्टर सकाले, आपने ना ये हमें एक और चीज बताई थी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की। अब डॉक्टर साहू, डॉक्टर अग्रवाल ये बोथ आर सेइंग कि अगर कैंसर जल्दी पता लग जाएगा तो हम बेटर ट्रीट कर पाएंगे। अब जब डिटेक्ट होगा, ट्रीट होगा, जल्दी होगा तो बेटर रहेगा। पर क्या ये बातचीत नहीं करनी चाहिए कि कैंसर प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? क्योंकि पहले शो में दोनों ने बोला कि अब यंगर लोगों को हो रहा है, लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, पर लाइफस्टाइल तो हमारे हाथ में है ना, बीड़ी को छोड़ना, तंबाकू को छोड़ना तो हमारे हाथ में है। क्या ये हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स इस चीज के बारे में बात करेंगे कि क्या लाइफस्टाइल चेंजेस किए जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, विलेजेस में, तालुकास में, ताकि रिस्क ही कम हो जाए ब्रेस्ट कैंसर? मैम बेसिकली जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, आप जो बोल रही हैं, केवल उसी चीज को एड्रेस करने के लिए हमने हमारे सब हेल्थ सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट किया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मतलब एक्सरसाइज, नॉट ओनली हेल्थ और वेलनेस के ऊपर भी बात की जाती है। वहाँ पे योगा टीचर्स भी हैं और मेडिटेशन भी होता है। प्लस जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का कंसेप्ट आया था वो इसीलिए आया था। देखिए आपने शायद बिलासपुर के पास जो गनियारी है, डॉक्टर रमन कटारिया, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, शायद डॉक्टर अग्रवाल साहब जानते होंगे। उन लोगों ने बिलासपुर में गनियारी में अपना मेडिकल, उनका जो हॉस्पिटल है वो खोल रखा है, और बाकी जो छोटे छोटे पॉकेट्स है वहां पे अपने आरोग्य केंद्र खोल रखे हैं। उसी लगभग पैटर्न को यहाँ फॉलो किया है, और इसमें 12 तरह की फैसिलिटीज हैं, जिनमें एक एनसीडी का एग्जामिनेशन भी है। तो जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को वो ज्यादातर बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग या फिर बीएचएमएस है या बीएमएस, तो मतलब मेडिकल एमबीबीएस नहीं है। सारे वो जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उनकी लगभग 40,000 उनकी सैलरी है। सो उन लोगों को एनसीडी के बारे में बताया गया, और ये टर्मिनोलॉजी या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये 2017-18 के बाद आया है, बिकॉज इन एनसीडीज को पे ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। ये आंकड़ा ये कहता है कि 60% डेथ्स अब इन वजह से हो रही है। सो अब इस पे अवेयरनेस आई है, और इन एनसीडीज को ही एड्रेस करने के लिए सीएचओस का हमारा एक बहुत बड़ा कैडर डेवलप हुआ है। सो ये जो लोग हैं, ये एक बीच में बड़ा अच्छा चैन का काम कर सकते हैं, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, कम्युनिटी और आशा, और प्लीज जो मेडिकल फैसिलिटी है उसकी तरफ से सीएचओस। सो इनिशियल तो वो एग्जामिनेशन सीएचओ अच्छी तरह से कर सकते हैं, बिकॉज बीएससी नर्सिंग में इतना तो सब चीजें तो अच्छे से बताई जाती है। राइट। Dr. Sahu, what can we do, not just the government, the private people, the NGOs, the media people? Because earlier both of you pointed out that late marriages is something which is leading to breast cancer. Now I'm trying to understand, how is late marriage leading to breast cancer? Because if you tell a woman you're getting married late, it's going to increase the chance of breast cancer, she really can't put two and two together here. So could you break it down for us? And how can you tackle this? Because women are now becoming ambitious, they're studying for longer, they want their jobs. How do we balance this, and what does it really mean? This is how the West has more of number of cancers, because as we accept a Western lifestyle, we are going to adopt their diseases. As we eat like them, we are also going to have diseases like them. Our genetic makeup will not change, the rest all will change gradually.
So second point is, okay. Second point, what you spoke about is why is that patients are getting younger, and in this world where all females want to do well professionally, how do they balance both the things? I may sound a little feminist here, but on a scientific ground, I will be very, very clear. Breast cancer, why it happens is when you have an uninterrupted estrogen surge and supply, that there is a high risk of cancer. Breast, that's well known. If the mother lactates for a lesser period of time because she has to go back to work early, then also you are bound to have a little more high risk of breast cancer. So what I do in my talks when I go and people ask me this, I tell that female has every right to choose what she wants to do. But what I would suggest is have one child and then have a gap, build up a career, and then go for the second one if you want to do that. Again, it is the female and her husband who has to take a final call. I'm just being selfish about the breast cancer part of the view. And that is one important thing. And that is also a reason why rural India has lesser breast cancers than urban India. And if you look at it, even the south-north divide is also there. And if you look at it, Chandigarh and the North India has more breast cancer than South India. That's also because of the dietary thing, what we eat in North and what we eat in South. So I think all of them contribute. But from that point, especially, I will take the bullet and answer very directly here that someone has to, and someone's really interested, have a kid, have your career, and then may not have a second kid, or you have a second kid which could be 8 to 10 years after your first kid. And that could probably you can have best of both worlds. That's my small thinking about it. I may be wrong. I want to stand corrected on that. But that is probably my best way as I see as an oncologist. And I have answered it without any honky-dory or without avoiding the question. Right. Dr. Agarwal is smiling, it's one thing to say, women have the choice. It's your choice to decide when you have a baby. But if you give me no support, if I cannot leave my child anywhere, I would think, why have a child? The government is making it mandatory to give medical maternity leave of 6 months. Private companies don't do that. So where is the support? You are giving the choice to women, but you tie her hand behind her back. So, private people have to do something. You are advising women to start, get married early, have babies early, and breastfeed them. And at least one baby, not baby. We never advise that. See, I want to stand corrected. That was never advised. It was scientific answer to your question. Okay, but the scientific way to tackle breast cancer would be to get married at a good time and have at least one child at a good time and breastfeed for long enough. But the sensitization is beyond women, isn't it, Dr. Agarwal? Yeah, the support comes beyond women, right? And they look for that support. Definitely. So, one point you raised in the beginning was that we should have some, literature in beauty parlors because women go there and they should know about it. How about having these conversations when you meet their husbands, if they're there for any advice, or their mother-in-laws who are coming to, to doctors for some problem of theirs? Does this need an approach which is just beyond women? It has to be the family. What is your thought, Dr. Agarwal? Yeah, absolutely. And I can quote an example that nuns are more prone for breast cancer because they are never married, because of prolonged estrogen exposure. This is one. And second example, I would like to give you the awareness in India and in developed country of Angelina Jolie. Her mother has had BRCA1, BRCA2 positive, and she underwent prophylactic mastectomy. And prophylactic mastectomy is very well practiced in abroad and developed world. So this is what the gap or the spectrum of the awareness in India and abroad. But as far as our local scenario goes with the partners with the government and other social organizations, different like Lions and Rotary, and also we put in into the this fight against breast cancer. And secondly, even the husbands can be trained. The family, because at one platform I was talking about breast cancer self-examination,
And my neurosurgeon who was with me, he was talking about the stroke. And when I told him that you have to examine, and evening the phone call came, my wife had a lump. So that's what the whole family needs to be make aware. Even the husband are more the key persons who should be trained in how to examine the breast, rather than just, and as Dr. TP Sauzo is a kind of planning of family is entirely their own discretion. We cannot force into it, but what the science says, we have to make them aware thereof it. All right, Dr. Sakale, I'll give you the last word. आप बताइए सर, आगे चल के आपके क्या होप है कि आप ये आशा प्रोग्राम से क्या देखना चाहते हैं? आपको लगता है इससे क्या जागरूकता बढ़ेगी, और क्या मध्य प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड इंप्रूव होगा? क्या कंपेरेबल हो जाएगा कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ, जहां अर्ली डिटेक्शन काफी प्रेवलेंट है और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी है? मैम, हम तो जैसा नाम है आशा, हर चीज को आशावादी दृष्टिकोण से ही देखेंगे। और क्योंकि इसमें आपने इनिशिएटिव लिया है और ये इनिशिएटिव बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी रहे हैं, मेरा ये कहना है हम लोग हमेशा वर्टिकल्स में काम करते हैं। हम लोग यदि कोलैबोरेट होके काम करें, या अभी तक जो नहीं हुआ उसको करें, यदि जो संस्थाएं जो जैसे डोनर पार्टनर्स हमारे साथ काम करते हैं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा सकते हैं। सारा ट्रेनिंग मटेरियल आपको डिजाइन करना है, ट्रेनर्स आपको तैयार करने हैं। सो हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म है, हमारा आशा का प्लेटफॉर्म है। उनके फोर्टनाइटली और जो मंथली मीटिंग्स होती हैं सेक्टर लेवल बेस पे, हम उन लोगों को ये अवेयर कर सकते हैं। और जब हम एक आशा को करते हैं तो इसका मतलब सभी समझ लीजिए हम 2 महिलाएं और हैं जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर। 2 महिलाएं ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो रही हैं क्योंकि वो लोग एक साथ मिलकर विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे पे काम करती हैं। सो हम लोग यदि एक आशा को पेयर करते हैं तो 3 तो हमारे पास ये महिलाएं ट्रेंड है। प्लस जब हम अलग अलग लेवल्स पे काम करेंगे या अवेयर जनरेट करेंगे, आज की स्थिति से तो बेटर ही जगह पे पहुंचेंगे मैम। और ये बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो उस चीज से पीड़ित हो रही हैं या वो फैमिलीज पीड़ित हो रही हैं, उनके लिए बहुत बड़ा काम होगा। सो मेरा सिर्फ यही कहना है कि नाउ वी नो द टारगेट, वी हैव 11,500 breast cancers in Madhya Pradesh in 2020 and around 4,200 died. Mortality is quite high. So can you tell us after the 5 years down the line, can you reduce this mortality at least? Mortality, not the incidence. Yes. Doctor साहब, since ये non-communicable disease में है, treatable है, so early detection से तो मुझे लगता है कि हम इसको कम कर सकते हैं। तो यदि ऐसा कोई मॉड्यूल, मतलब मैं थोड़ा सी चीजों को समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा मॉड्यूल डेवलप होता है तो हम उसको अवेयरनेस जनरेशन में काम कर सकते हैं। सिर्फ देखिए सर, आशा ट्रीटमेंट में नहीं है, आशा केवल रेफरेंस लेवल। I know. It is early detection. Yeah. So early detection, अगर कुछ साइन है, जैसे सर्वाइकल कैंसर में एसिटिक एसिड प्रिपरेशन जो उससे हो रहा है, एक कैंप लग रहा है अभी, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैंप्स ऑर्गेनाइज करें। हमारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हमारा सेक्शन है, वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्होंने कैंप्स किए हैं, और ऐसे जिनके भी पास है तो वहां पे उनपे VIA जो टेस्ट हो रहा है वो उससे पता लग पाता है। और इसमें तो लम्प्स आना या जो ब्रेस्ट की साइज में अंतर आने से बहुत इजीली पता लग सकता है। तो यदि हम ये चीज पहुंचाते हैं नीचे के लेवल पर, तो अर्ली डिटेक्शन में जरूर हमें देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं सर्वाइकल कैंसर में एक अच्छापन है कि आपको पैप स्मीयर में CIN या अर्ली प्री कैंसरस डिजीज से लेके कैंसर की जो जर्नी है वो 20-25 साल की है। आपको इतना बड़ा लैग पीरियड मिल जाता है। दैट इज व्हाई इट इज अ गुड थिंग टू स्क्रीन। ब्रेस्ट कैंसर आपको इतना वक्त नहीं देता एक्चुअली। सेकंड थिंग इज सर्वाइकल कैंसर इज अ वेरी, यू जस्ट नीड अ पैप स्मीयर and pap smear once a year, and then after some time you need 2 to 3 years में एक बार। So आपको easy हो जाता है, just a pap smear in a good way by gynecologist or a trained any nurse, and आप उसको भेज देते हैं स्लाइड्स को, और उसी हिसाब से। इन कॉन्ट्रास्ट ओरल कैंसर भी बहुत आसान है। इवन केरला से डेटा है, आप मुंह की एग्जामिनेशन करिए हाई रिस्क लोगों को, और सनलाइट में अगर आप 1 महीने में एक बार करते हैं, जो आशा वर्कर्स या कोई भी फैमिली में कर सकता है, आप कैंसर को जल्दी पकड़ लेते हो। बट ब्रेस्ट कैंसर इससे अलग है।
जब तक हम इसको इनसे जोड़ते रहेंगे हम ब्रेस्ट कैंसर में हारते रहेंगे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर आपको मौका नहीं देगा 2-4 महीने से ज्यादा। सो मेरी लास्ट में सजेशन यही होगा कि हम प्रिवेंशन के तरफ ज्यादा फोकस करें, लाइफस्टाइल के ऊपर ज्यादा फोकस करें, एंड देन वी टेल द फीमेल्स, जैसे आपने सवाल किया था अनीशा जी, कि आई वुड लाइक द फीमेल्स टू बी अवेयर ऑफ देयर ओन सेल्फ। आई सी फीमेल्स नॉट बीइंग अवेयर ऑफ देयर ओन सेल्फ। स्तन में गठान है, उनको खुद ही नहीं मालूम स्तन में गठान है। That is something I am not ready to accept it. So that needs a female to be aware of their own body. पहला चीज, the family should support them mentally, socially. I would cannot expect. Dr. Sahu, all of this is going to become possible in the future if you are training 3 lakh women, and if these 3 lakh women are themselves aware. Yeah. So that's a good start. But what I meant by all this is, you need an infrastructure beyond this to let the female reach the logical conclusion and reach the right hospital and the treatment. So breast cancer is not like cervical cancer or oral cancer. It is a much different cancer. Definitely. But that is, I think, even beyond Dr. Sakale's brief, since he's working. I totally feel for him, and he's very honestly has told everything. That's very nice of him. But I think it's a much more complex thing. Yeah, so we're going to have to wrap it up, but we have this hope that, if this awareness increases in such a manifold fashion in Madhya Pradesh with ASHA workers doing the work that they are, that, early detection will become possible. And then even the private companies, private healthcare providers can chip in. Earlier cancer is easier to treat for both the practitioner and the patient. And hence, we hope that steadily the infrastructure will improve, both private and public within Madhya Pradesh, and this early detection will lead to better cure rates and lower mortality rates in the years ahead. Lesser government cost. That's also important. A metastatic disease is much more costly to treat. Definitely. So I'd like to thank all 3 of you for joining us today. Dr. Sahu, Dr. Agarwal, Dr. Sakale, thank you so much for taking the time and joining us. With that, we will wrap up the show. Thanks to all the experts for joining us. Cancer is a word and it's not a sentence. We at IHW Council will continue to advocate for greater dialogue and awareness about breast cancer so that no family has a sister or a mother or a wife debilitated by this disease. Stay tuned to IHW Council's Facebook page for all the latest updates on a month-long breast cancer awareness campaign and much more. See you again. Till then. Thank you. Bye-bye.